Now the next one, at a pressure of 13 bar, if 2450 kilojoule per kg is required to produce it from 0 degrees Celsius. So what is 2450? Tell me. HF. 2450 क्या है? HF sir. Enthalpy of water. नहीं, बिल्कुल नहीं. Enthalpy of evaporation. एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन भी नहीं आएगा. सर HFG. HFG भी नहीं आएगा. दैट इज नथिंग बट Hg. यहां पर Hg होगा. ये वैल्यू क्या है आपकी? ये वेट स्टीम की एंथैल्पी हो सकती है, ड्राई सैचुरेटेड की भी हो सकती है और सुपर हीटेड की भी हो सकती है. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द स्टीम. कौन सी स्टीम है वो हमें मालूम नहीं है. ठीक है. So 2450, that is the enthalpy of steam. Whether it is for the wet steam, dry saturated steam, or whether it is for superheated steam, that we have to find out first. And once you have find out this enthalpy is for which steam, then you go for finding the dryness fraction or the superheated temperature. Okay. So how will you find out whether it is a wet steam or a superheated steam? Tell me. Sir, from the pressure given, 13 bar pressure. Yes, 13 bar pressure दिया है. Suppose ये रहा. Sir, we will add HF and HFG from the steam table. Very good. Exactly, very good. And what is that value? It is 2700 something, 2786 or 87. Okay. आप क्या करोगे? ये दोनों को आप ऐड करोगे, ये दोनों को. So that is 814.93 plus 1972.7. So यहाँ पर जो next column आता है, यहाँ मैंने जानबूझ कर लिखा नहीं है, that is Hg. Okay, that is your 6th column. आपके steam table में है ये. Okay, that is given in the steam table. यहाँ पर steam table में आपका ये रहा. This is Hg. Okay, this one. So that directly you are getting at the pressure of 13 bar. So 13 bar पे आप 13 बार पे ये कितना आ रहा है आपका? 2787.6. ये है आपका वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू है आपकी? Hg की वैल्यू. एंड व्हाट इज Hg? व्हाट इज Hg? Enthalpy of gas. नहीं, नॉट एंथैल्पी ऑफ गैस. गैस यहाँ आएगा ही नहीं. गैस भूल जाओ. Enthalpy of steam. एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. स्टीम भी मत बोलो. एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, क्योंकि जो आपका टेबल दिया हुआ है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड स्टीम. सो Hg होगा वो दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. इज इट क्लियर? So up you are getting the value of Hg as 27 something, 2786. Okay, and here the value is 2450. So that means what should be the condition of steam? कौन सी होगी condition of steam? Wet steam. Wet steam. Wet steam. Wet steam होगी. हमेशा जो भी वैल्यू दी है वो स्टीम टेबल की वैल्यू से कम होगी तो ऑलवेज इट इज अ वेट स्टीम. ठीक है. और अगर उससे ज्यादा होगी तो सुपरहीटेड स्टीम हो जाएगी. इज इट क्लियर? ओके. सो अब क्या करोगे? अब आपको पता चल गया कि ये वेट स्टीम है. सो नाउ व्हाट विल यू डू नाउ? Dryness What will you fraction. do now? How will you find out the dryness fraction? Sir, we will first find volume of the saturated steam, dry saturated steam. नहीं जरूरत पड़ेगी. वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस. एनी अदर आइडिया? ये छोटे छोटे सवाल है, उसके बाद में हम बड़े सवाल में जाएंगे, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. यस. एनी आइडिया? ये वेदर इट इज राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. गिव मी द आंसर. Sir, HF plus X into HFG. That is equal to what? H H wet. wet. HF plus H wet. Very good. So H wet is equal to HF plus X into HFG.
एच वेट आपकी कितनी है? 2450. Yeah, exactly. Very good. So 2450 because 2450 is less than Hg value. Okay. So that means whatever the value of H here, the enthalpy is given. That is the enthalpy of the wet steam. So HW is your 2450 is equal to HF, that is 814.93 plus X into HFG, that is X into 1972.7. So इसमें अननोन आपका सिर्फ X होगा. So वो X के हिसाब से आपकी वैल्यू आएगी 82.88% dry. Is it clear? Okay. So determine the condition of 2 kg of steam. Okay. At a pressure of 13 bar, if 4900 kilojoule is required to produce it from water at 0 degrees Celsius. What will you do? Shall I repeat it Sir, again? it will be a superheated steam. मेरी बात एक बार, don't jump into the solution. मैं वापस बोल रहा हूँ. Determine the condition of 2 kg of steam at a pressure of 13 bar if 4900 kilojoule is required to produce it from water at 0 degrees Celsius. What will you do? Yes. Sir, it is the same question. It is the same Because if- question. Exactly. Divide 4 Very 9 good. HF. Divide by Yes. 2. Yes. Exact. Excellent one. Very good. Very good. अब ये जो वैल्यू मैंने रखी हुई है, ये किसकी है? इट इज ए स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक एंथैल्पी. मैंने आपको क्या दिया था? 4900 और उसका यूनिट कौन सा था? इट इज किलो जूल, नॉट पर केजी. रिमेंबर, इट इज नॉट पर केजी. सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर टोटल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, दैट इज कैपिटल एच. अब 2 kg of steam दिया हुआ है, so I have to convert it into specific values. So 4900 को स्पेसिफिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको मास के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा. Okay, so 4900 divided by 2, that is nothing but 2450 kilojoule per kg. So मैंने जो सवाल पिछले ये पूछा थर्ड वाला है और ये जो क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क नहीं है. But you should identify how to solve these types of question. It's a simple question. You must know the fundamentally what to do it. Okay, question simple होते हैं, but you must understand the fundamentals. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. Now shall we proceed now? Okay. Now the external work done. Up. There are two enthalpies. One is a sensible heat, another is a latent heat. Okay. Sensible heat में क्या होता है? What is happening in sensible heat? टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है सर. टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है. वॉल्यूम चेंज होता है? नहीं Sir, होता. slight change. That is negligible. We can say that okay, it is negligible. So we don't have changing the volume. Okay. So whatever the heat is supplied, that is utilized in the increasing the temperature without converting into steam. So जितनी भी आपकी एनर्जी आ रही है, that goes into the internal energy of the water to raise its temperature. अब जब it reaches to the saturation temperature and then you go on adding the heat, then what will happen? Latent heat में क्या होता है? टेम्परेचर The heat will be utilized in Phase- formation of Temperature- steam particles. Formation of Yes. steam will commence. Formation of steam will start. Okay, from the TS. So आपका formation of steam start होता है. Okay. So जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टीम जनरेट होती जाएगी. ओके. और जैसे स्टीम जनरेट होती जाती वैसे वॉल्यूम का क्या होगा? Increment. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ओके. सो जो भी आप एनर्जी डाल रहे हो, जो भी हीट आप डाल रहे हो, दैट इज यूटिलाइज इन टू वेज.
पहला है कि इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, दैट इज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम पार्टिकल्स. ओके, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ इंटरनल हीट. ठीक है. और सेकंड क्या होगा कि इट इज यूटिलाइज्ड टू मूव द पिस्टन इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन. So when you are moving a piston into the upward direction, so which energy is utilized? That is work is to be done by the steam on the piston. You understand what I'm telling you? जो latent heat का पोर्शन होता है उसमें हीट दो तरीके से यूटिलाइज होती है. पहला है कि एक स्टीम जो है वो इंटरनल लेटेंट हीट होती है, दैट इज नथिंग बट कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम पार्टिकल्स. सो जो आप हीट डाल रहे हो वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है. सो दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द वाटर पार्टिकल्स इनटू द स्टीम पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द इंटरनल लेटेंट हीट. और सेकेंड कौन सा होता है? मूविंग द पिस्टन इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल वर्क इज टू बी डन. सो first thing is overcome the internal molecular resistance of the water in changing its condition from water into steam. That is known as the internal work. And in overcoming the external resistance of the piston to increase its volume, that is to be called as external work. Okay. So energy stored in the steam, it is known as internal latent heat. So that is internal work is nothing but your internal latent heat. Okay. And energy of the steam utilized in doing work on the piston is known as external work of evaporation. ठीक है. So enthalpy of evaporation is what? That is enthalpy of evaporation is equal to internal latent heat plus external work of. Is it clear? So enthalpy of evaporation is nothing but internal latent heat plus external latent heat, nothing but water. It is clear? So enthalpy of evaporation आपके दो होगी. Okay, that is H internal latent heat plus external work done. Then what would be the external work done per kg of wet steam? Work done का फॉर्मूला क्या है आपको? I think आपके इंट्रोडक्शन में आ गया होगा ये. Work is equal to what? P into V. PV. Very good, excellent. P into V. अब P हम जब बार में ले रहे हैं किलो जूल में आएगा, किलो जूल पर केजी आएगा, तो आपको बार में से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि आपका स्टीम टेबल में प्रेशर की वैल्यू किसमें दी होती है? आपकी बार में दी होती है. ओके. और आपका जो आंसर आता है दैट इज इन किलो जूल पर केजी. सो इट इज P into V multiply by what? 10 raised to 5. 9. 100. 10 raised to 5. नॉट 10 raised to 5 होगा तो जूल हो जाएगा. 100. 10 raised to 5 करो 100. 10 raised to 5 करोगे तो जूल हो जाएगा. ओके, इससे 10 raised to 5 में चला जाएगा. और किलो जूल में लेना है तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100. सो रिमेंबर इट इज 100 into P into V में. सो डोंट जब भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के एग्जांपल लेने हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला 100 into PV याद रखो आप. ओके. सो 100 into P into V, that is the specific volume of wet steam. And what is the specific volume of wet steam? That is X into Vs. Okay. And external work done per kg of dry saturated steam is nothing but 100 into P into Vs. Okay, that is kilojoule per kg. And external work done for the superheated steam is what? Give me the answer. 100 into P into V. 100 into P into V soup. okay. So next point is you have to find out the internal latent heat of the steam. Okay, आपको क्या ढूंढना है? Internal latent heat of steam. So internal latent heat of the steam is nothing but enthalpy of evaporation minus external work done. Okay, so internal latent heat is latent heat, that is enthalpy of minus external work done. So internal latent heat of wet steam is what? Is equal to what? Tell me. Latent heat of wet steam.
is what? X into HFG. Okay, because it's a wet stream, minus, what is the equation of external work done? 100 into P into XVS, that is V wet. ये इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि हमें एग्जांपल इसके ऊपर से सॉल्व करने हैं. Okay, so it is quite easy. That is internal latent heat per kg of wet steam is the latent heat of wet steam, that is nothing but X into HFG, and minus work done of the wet steam, that is 100 into P into V wet, and V wet is to be considered X into Vs, and heat per kg of dry saturated steam is HFG minus 100 into P into Vs. ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं जब भी आपने फाइंड करना है इंटरनल लेटेंट हीट, और इसके ऊपर से हम एग्जांपल में जाएंगे. Find the external work of the operation and internal latent heat of 2 kg of steam at a pressure of 1.3 megapascal when steam is 0.8 dry and when steam is dry and saturated. So what is given? Mass Dryness fraction. Yes, mass वाला दिया हुआ 2 kgs. अब प्रेशर कितना होगा आपका? 1.3 megapascal is how much? 13 bar. 13 bar. It is equal to 13 bar. ये हमेशा मेगा पास्कल दिया हो या किलो पास्कल दिया होगा या पास्कल दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है बार में. अगर तो डायरेक्ट बार दिया है तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग. बट इट इज, इफ इट इज गिवन इन एनी ऑफ द यूनिट, you have to convert into the bar because we have to see from the steam table. So pressure is equal to 1.3 megapascal, that is equal to 13 bar. And for condition A, when steam is 0.8 dry, what would be the at steam bar internal latent heat HFG is equal to this much and specific volume is 0.15125 meter cube per kg. Okay, so first you have to find out the external work done. What is the equation of external work done of evaporation? 100 into P into V wet. Into V wet. Okay, so that is equal to, and latent heat is it, that is equal to of wet steam is X into HFG. ठीक है, so 1578.16 and external work done is 100 into P into X into Vs. So 100 into 13 into 0.8 into 1.125 and that is equal to 157.3. So that means internal latent is equal to, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? Value is to be taken as 1578.16 minus 157.3. So that would be your answer. आपका आंसर क्या होगा? What would be your answer? We have to find out the, suppose internal latent heat ढूंढना है, so आपने ढूंढा X into HFG ढूंढ लिया, okay, और 100 into P into Vs, X into Vs ढूंढ लिया. So what would be your answer? ये एक चीज याद रखो, 2 kg लिखा हुआ है, so always your internal latent heat, whatever you have find out, that would be multiplied by 2. So that would be okay, because ये kilojoule per kg में होगा, so we have to, what 2 kgs, so that would be in kilojoule. That would be the total internal latent heat, 2841.72. So multiply इसलिए करना है, हमें total value ढूंढनी है, स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से नहीं जाना है. जब मास आपको दिया हो तो एट द एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय मास सो दैट यू कैन गेट द फाइनल आंसर. व्हेन स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड, इट इज HFG is 1972.217 kilojule per kg. Extra 100 into P into Vs, so 100 into 13 into 0.15125, so 196.25. So internal latent is
ms multiplied latent heat minus external work done. So ms, that is 2 multiplied by 1972.27 minus 196.625, and that is 3552.15 kilojoule. Okay, that is clear. So this is how we can find out the internal latent heat of steam, and that is only for two steam you have to find out. That is nothing but for wet steam as well as dry and saturated steam, because latent heat is always between the water from conversion of the water takes place from water into steam. Okay, what is internal energy? Summation of kinetic energy and potential energy. Okay, so that is also known as the actual energy stored in the steam above the freezing point. Okay, जो water के अंदर जो energy store होती है, that is to be considered as the actual energy. Actual energy, actual potential as well as kinetic energy. हर एक particles का आप summation करोगे तो that would be the internal energy. It is also defined as, इसका equation भी आपने शायद देखा होगा. What is H is equal to something plus something. What equation आप capital H is equal to something plus some value. U plus PV. U plus PV. U plus PV. Very good. So what is U? That is internal energy. And what is PV? That is the work done. External work done. And external work done. And what is H? That is the enthalpy. Okay. So enthalpy is equal to internal energy plus external work done. That already you have learned in the introductory part. So H is equal to U plus PV. अब एक चीज याद रखिए यहाँ पर, ये कैपिटल H का मतलब क्या होगा, ये आपका टोटल एंथैल्पी. कैपिटल U का मतलब क्या होगा, इसे टोटल इंटरनल एनर्जी. और P इनटू कैपिटल V आएगा, रिमेंबर यहाँ पर. क्यों? क्योंकि कैपिटल V इज पर केजी होगा तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम चला जाएगा. बट इफ इट इज ए टोटल वॉल्यूम देन इट इज किलो जूल. ओके, सो P इंटू स्मॉल v और P इंटू कैपिटल V में इतना फर्क होता है. P इंटू स्मॉल v लोगे तो एक्सटर्नल वर्क डन पर केजी होगा. ओके, और P इंटू कैपिटल V लोगे so that would be the total external work done. Okay, अगर जो आप इसको स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हो so it will be small h is equal to small u plus P into small v. Okay, that is understood. Okay, this is a specific enthalpy is equal to specific internal energy plus this is the external work done per kg. So thus internal energy is nothing but H steam minus external work done. So ये आपकी internal energy आपकी तीन आएगी. कौन कौन सी आएगी? Internal energy of the wet steam, internal energy of the dry saturated steam, and internal energy of the superheated steam. Specific internal energy of the wet steam is H wet minus W wet. So U wet is equal to H wet is nothing but HF plus X into HFG. This is small HW minus 100 into P into XVS. Okay. So that is of, it is not, it is into into X into VS. Is it clear? So U wet is equal to HF plus HFG minus 100 into P into XVS. Specific internal energy of the dry saturated steam is HF plus HFG, that is nothing but HG minus 100 into P into VS. That is clear? And specific internal energy of superheated steam, that is the U soup, that is equal to H soup minus W work done soup. So U soup is equal to HF plus HFG. Okay, that is your HG plus KS, that is equal to 2.1. T soup minus TS is degree of superheat minus 100 into P into V soup. So V soup is the specific volume of superheated steam
and that is nothing but Vs into T sub by Ts. Okay, so this is about the internal energy of three particular steams. That is for wet steam, dry saturated steam, and superheated steam.